आज के इस लेसन में हम द वर्ड येस के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे पास मुख्तलिफ और भी जो अल्फाज मौजूद है और फ्रेजेस मौजूद है वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ येस, वो अल्फाज जो कि हम येस के हाँ उसकी बजाय हम इस्तेमाल कर सकते हैं. दे आर पॉसिबली द वर्ड्स some of the words and phrases right here. The word absolutely means यकीनन, exactly mean बिल्कुल, surely mean बिल्कुल, no doubt about that कोई शक नहीं, all right ठीक है, definitely mean पक्का, sure why not हाँ क्यों नहीं, of course बिल्कुल, no problem mean कोई तकलीफ नहीं. So dear students, there are some of words which can be used instead of yes, and they are somewhat, we can call it inter-synonyms, having the same meaning, and we use it to avoid repetition of the very word yes. So these are some of the words that we can use instead of yes to avoid repetition. Thank you.